वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एन एनिमेटेड इंडिया। मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। लाइट्स ऑन किया? क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, आज की लिस्ट के लिए जो 10 बैंगर्स निकाले हैं ना, उन्हें ही सुन रहा हूँ मैं। दिखा? तेरे अरे सही है भाई। भाई ये बात तो सही है, एनिमे फैंस का सही पहचान उनके प्लेलिस्ट से आती है। अगर तुम्हारे प्लेलिस्ट में ब्लू बर्ड या फिर अनरावल जैसे एनिमे के ओपनिंग्स नहीं है, तो बेसिकली यू आर जस्ट वॉचिंग एपिसोड्स, यू आर नॉट लिविंग इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे ही ओपनिंग बजती है तो भाई सबका दिल बोलता है लेट्स गो। तो आज के एपिसोड में हम लाएंगे टॉप 10 ऐसी एनिमे ओपनिंग जो केवल नॉस्टैल्जिया नहीं, गूज़बम्प्स गारंटीड है। So number 10 on our list is again from Full Metal Alchemist Brotherhood. This opening song was released in the year 2009. It ran between the anime episodes from 1 to 14. The singer of this song is Yui, who is a solo artist, played for Sony Japan. The genre of this song is J-rock and emotional resurgence. It has won the number 1 position in Oricon Singles chart in 2009. The global ratings is 8.8 out of 10 in the anime music quiz OP Index. भाई यूवी का आवाज सुनकर लगता है जैसे सनलाइट ग्लास तोड़ के विंडो से अंदर आ रहा हो। It's a perfect theme for both Ed and Al. The lyrics of this song fits the theme for second chances. If only I could turn back time. इस ओपनिंग ने फुल मेटल अल्केमिस्ट को रिबर्थ की आइडेंटिटी दी। The next opening on our list is The World from Death Note. The song is from the year 2006. It ran between the episodes of 1 to 19. The band is The Nightmare, the Visual Kei J-rock band. The impact was dark visual mirrors, light versus air duality. The rating of this song is 8.7 out of 10 from Fan Music Ratings in 2023. इसके लिरिक्स वी आर द डार्कनेस इन द वर्ल्ड कीरा का थीम सॉन्ग लगता है और नाइटमेयर का गॉथिक टोन प्योर जीनियस। भाई जब लाइट का स्मर्क इस बीट पे सिंक होता है, इंस्टेंट चिल्स। और इस ओपनिंग के बाद 2006 में जापानीज रॉक का सर्च YouTube पे 300% इंक्रीज हो गया। Now, number 8 on our list is Silhouette from Naruto Shippuden. This opening was released in the year 2014 and it ran between the episode numbers 380 to 405. The band who sang this song was Kanabone and it won the RIAJ Gold Award on the year 2015. The views crossed 260 million on YouTube and it's rated at 9.1 out of 10 in the 7th Global Anime Music Quiz. तो Shippuden का emotional crescendo और in Sky, Naruto vs Past Memories, Silhouette Transitions. ऐसे लगता है जैसे कि आपको क्लोजर मिल गया। कानाबोन का एनर्जी एंथम बन गया फॉर ग्रोथ एंड फेयरवेल। हर फैन के लिस्ट में आपको ये गाना जरूर मिलेगा। Next on our list is The Colors from one of the greatest anime ever, Code Geass, Lelouch of the Rebellion. This song was released in year 2006. It ran between the episodes from 1 to 12 and the band was Flow, the J-rock duo Take and Koshi. It also peaked at the Oricon chart at number 2. It was also used for the Geass merch ads. It was also rated at 8.6 out of 10 from Anime Music Quiz. The trumpet intro was enough to shout out Zero और Flow ने Code Geass में रिबेल वाइब डाल दी। मोनार्की वर्सेस रेवोल्यूशन विजुअल्स इक्वल्स टू प्योर सिंबलिज्म। लेलूश के मास क्लैश के साथ बीट ड्रॉप लेजेंडरी मूवमेंट। So the next one on our list is My Dearest from The Guilty Crown. This opening song was released in the year 2011. It ran between the anime episodes of 1 and 11. The band is Supercell. Producer is Rio, featuring Koeda on vocals. Genre is symphonic pop rock. Awards: Japan Record Award nominee for the year 2012 and the number 22nd Anime Music Quiz rated it 8.9 out of 10. The lyrics: Please don't let me go. Post disaster जापान का पेन और होप एक ही लाइन में डिपिक्ट करता है। सुपरसेल की सिनेमैटिक अरेंजमेंट और कोएडा का एंजेलिक वॉइस इज इक्वल टू इमोशनल डेटोनेशन। ये ओपनिंग ह्यूमैनिटी के लिए
एक ट्रैजिक लव लेटर जैसा लगता है। everything that makes me whole in The next opening is from my favorite artist, Gurenge by Demon Slayer. This song was released in the year 2019 and it ran between the episodes from 1 to 26. The singer was Lisa and it won the Japanese Record Award for Excellence in 2020 and it also hit the number 1 position in Billboard of Japan Hot 100 and it has more than 400 million plus streams on Spotify. It was also rated 9.4 out of 10 on Japanese Spotify Top 10. Lisa ने mainstream के barrier तोड़ दिए and Gorenge is the definition of fire spirit. From Tanjiro's determination to Nezuko's calmness, each beat burns and it was the pandemic era's anthem. Also, you can only define this song in one word, unstoppable. So next one on our list is Bluebird from Naruto Shippuden. This opening was released in the year 2008 and it ran between the anime episodes of 54 and 77. The name of the band is Ikimono Gakari. It's a J-pop trio. It has won the RIAJ Gold Awards in the year 2008. It has received more than 500 million views and in the ML Music poll, it has been ranked the number 1 nostalgia and rated at 9.5 out of 10. So if you remember, Naruto running towards Sasuke, open blue sky, and Ikimono Gakari singing Aoi Aoi Anno Sora. ये हर एक फैन के डीएनए में बसा हुआ है. Pop rock melody plus childhood dreams is equal to pure emotions, the ultimate nostalgia trip. いたら戻らない Next on our list is Unravel from Tokyo Ghoul. This song was released in the year 2014 and it ran between the episodes 1 and 12. The singer was TK from the band Link Society Seeger. Awards was Billboard Japan Hot Animation number 1 in 2014. The impact was TikTok revival in 2020 and more than 1000 plus AMVs on this song. It was rated at 9.6 out of 10 on Spotify and YouTube Index. TK का falsetto voice shattered glass की तरह है. Beautiful yet painful. The lyrics of this song, Can You Tell Me Who I Am? Existential anthem बन गया था और गिटार बिल्ड प्लस स्क्रीन एकदम इमोशनल कोलैप्स हो गया और ये सॉन्ग टोक्यो गुल की आइडेंटिटी बन चुकी है. Next on our list is Guren no Yumiya from Attack on Titan Season 1. This song was released in the year 2013 and it ran between the anime episodes of 1 and 13. The band was called Linked Horizon and it won the Animation Kobe Theme Song Award in the year 2013. It has crossed more than 700 million views on YouTube and it ranked number 3 on the Billboard Japan All Time and it was rated at 9.7 out of 10. The Latin choir, German chants और march drums ये सिर्फ एक ओपनिंग नहीं, ये एक बैटल क्राई. लिंक्ड हॉराइजन ने लिटरली इस सॉन्ग को एक वॉर का एंथम बना दिया. And finally, the number 1 on our list is A Cruel Angel Thesis by Neon Genesis Evangelion. This song was released in the year 1995 and it ran between the episodes of 1 to 26. The singer was none other than Yoko Takahashi. It also won the award for the Gold Disc Award for Animation Song in 1996. It became Japan's number 1 karaoke anime song for 15 years. It also got a rating of 9.8 out of 10 from NHK Best Anime Song of 2022. This is the origin of all anime opening. Upbeat tempo, existential lyrics, and the neon aesthetics. ये योको तकाहाशी की आवाज एकदम टाइमलेस क्लासिक है. हर जनरेशन के एनिमे के फैन के लिए ये एक रिचुअल बन चुका है. द एंथम ऑफ एटर्निटी. अब कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट ओपनिंग कौन सा है, ब्लूबर्ड, अनरावल या गुरेंगे. और अगर तुम्हारा पिक इस लिस्ट में है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो. और जैसे हम कहते हैं, एनिमे फैंस हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए. तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे की. टिल देन Stay animated, stay awesome.